गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करिबा पॉलिटी रो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा। ठीक अछि, लास्ट क्लास जेमति कोहाइतिला प्रैक्टिस करिबा। जेति की पढाइछि ता भितर क्वेश्चन करिके आनिछि बोधे 25-30 टा खंडे क्वेश्चन थिबो। आगो कर दबा, देन तापरे कांसेप्ट पढियो फंडामेंटल राइट्स। ओके देखो The inaugural session of the Supreme Court of India took place on which day? Inaugural session of the Supreme Court of India took place on which day? Anyone? महेश बाबू कहतु 30 सेकंड टाइम जो माने भाबिया कथा भाबी के हाथ टेक हला 30 सेकंड टाइमर लगे देबी। हाउ माको 28 जनवरी 1950। ओके, आउ एनीवन एल्स? 26 जनवरी 1950। आउ एनी अदर आंसर? 28 मैम प्रियंका मैम फास्ट थर केबे हेतला 26 आंसर इट्स 28 जनवरी 1950। The inauguration took place on 28 January 1950 at 4:45 am when the judge took their seats in the Supreme Court. प्रथम थर 28 जनवरी 9:45 रे जाइकी बसती। ठीक अछि, ओके नेक्स्ट जीवा। Who appointed as assemblies माने constituent assemblies constitutional advisory in 1946 during the framing of Indian Constitution? के जगन बाबू कहतु बीएन राव। आउ एनी अदर आंसर? बीएन राव समस्त बीएन राव। ठीक अछि, बीएन राव। ओके, बीएन राव was the jurist and appointed as constitutional advisor to the Constituent Assembly. Rao prepared the original draft of the Constitution. बस next question. The first health minister of independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया रो फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृत कौर एंड विजयलक्ष्मी पंडित। किए? हाथ टेक नाई गसिप नहीं। शुभम बाबू कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। आउ मैम राजकुमारी अमृत कौर। आउ जगन? आउ एनी अदर आंसर कहा पाखरे अछि किछि? राजकुमारी अमृत कौर। ओके, करेक्ट आंसर इज राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर on 2nd February 1889 to 6th February 1964 पर्यंत बंचिथिले, was an Indian activist and politician who was appointed as the first health minister of India. ठीक अछि, आउ जो पंडित सुनिल नाटा कोन? विजयलक्ष्मी पंडित। सी के थिले? आईएनसी रो मेंबर थिले, जवाहरलाल नेहरू कर कजन थिले। ठीक अछि, तापरे फास्ट थर कोन हेले सी? प्रथम राज्यपाल को स्टेट रो? हाउ तम पेंडा क्वेश्चन। ठीक अछि, सॉरी which of the following not a constitutional body? तुमको बतैछि constitutional body माने कोन ना जो ऑर्गेनाइजेशन विषय रे, जो ऑफिस विषय रे कि जो कोन तमे कहबो संस्था विषय रे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिक्र नाही, माने कॉन्स्टिट्यूशन ने किछि डिस्क्रिप्शन नाही, तार लॉ नाही, तार प्रोसीजर नाही, सेटा को कहबो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आ जोटा अछि ताको कहजिबो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एंड आउ गोटे डिफरेंट टाइप रो बॉडी अछि जो ऑर्गेनाइजेशन विषय रे पार्लियामेंट रे लॉ तयारी करा हितबो, कॉन्स्टिट्यूशन में नथिबो, बट पार्लियामेंट रे लॉ तयारी करा है कि सेही संस्थाटा को तयारी हितबो, सेटा को कहजिबो कोन? स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी माने जोटार लॉ बैकिंग थिबो, कॉन्स्टिट्यूशनल जोटारे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग थिबो, एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल माने कोन? जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल नुह, माने तार जिक्र किछि ना। को कोतुरेटा
या भितर कोटा हबा आंसर फाइनेंस कमिशन इलेक्शन कमिशन नीति आयोग नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स नीति आयोग मोस्ट ऑफ द आंसर आछी नीति आयोग तो होपफुली आंसर नीति आयोग हबा कथा केबे तयारी हेतला नीति आयोग 1 जनवरी 2015 ठीक अछि एंड ता पूर्वरु नीति आयोग पूर्वरु सेही संस्थार ना कोन थिला 5 ईयर प्लानिंग कमिशन 5 ईयर प्लान तो नो प्लानिंग कमिशन थिला प्लानिंग कमिशन टा जते बेले मोदी बाबू आसिले प्रथम काम से कोन कले ना आमो प्लानिंग एमिति हो हमर टिके डिफरेंट प्लानिंग हबो हमें गोटे नुआ ना दबु ता ना देले नीति आयोग 14 मसिया रे जिति के आसिले जनवरी 1 तारिख रे बदले दे ठीक अछि ओके 5 ईयर प्लान टा हमें काटो अडॉप्ट करछे रशिया ठीक अछि नेक्स्ट which of the following adjectives is not a part of preamble preamble लो गोटे पार्ट हो liberty tolerant sovereign secular tolerant ठीक अछि tolerant माने कोन सहिष्णुता हमर जानि तो इंडिया लोक मानकर सहिष्णुता बहुत भलो अछि गोटे गप्प कहिछि तमे केबे सुनिछ ए सहिष्णुता ऊपर सुनना हां कोन करले छोटो ब्रीफ रे कहि दोछि 2 मिनिट जने राजा थिले से कहले तांको देशर लोक मानकर टॉलरेंस केते अछि से चेक करबा को चाहिए तो टॉलरेंस चेक करबा पे कोन करले ना ता गोटे ब्रिज थिला जो ब्रिज रे लोक माने गारू शहर को जाउथ तो प्रथमे कोन करले ना गोटे लोक को ठिया कला कहले ताको जे टंकाटे लेखे समस्त कलेक्शन करिवु जो लोक माने एपटे जिबे लोक माने एते टॉलरेट थिले जे टंकाटे देकी समस्त गले पाटितुंड नाही टिके अपोजिशन हला बट गले तापरे 15 दिन पर टंके जगह 2 टंका करा ठीक अछि तथापि देकी गले 2 टंका रु 5 टंका करा गला आ मासे 2 मास पर 5 टंका करा गला तथापि गले राजा कहले केते सहिष्णु मो देशर लोक ठीक अछि हौ तापरे एबे कोन करो ना जहा तो 5 टंका दबो जो लोकटा ठिया है गोटे विधा मारिवो तापरे छाड़ी ठीक अछि लोक टिके माने कोन करले असुविधा हला 2 दिन गला 4 दिन गला 10 दिन पर लोक समस्त मेल होई कि राजा पाख आसिले ना ताहले ठीक अछि एबे लोकंकर मोर कोन सहिष्णुता भांगिला माने एठी शेष टॉलरेंस शेष बट लोक माने आसी कोन कहले जे आज्ञा हेटी गोटे लोक ठिया करंतुनी जोड़े 3टा 4टा लोक खंडे ठिया कर दियंतु सो दैट हमें जल्दी जल्दी माड़ खाई के पळे गट इट तो एई भले देश हमर तो गोटे लोक हले से लाइट्स जणु को बाडेबो पुनी आउ जणु को बाडेबो टाइम लागुची ना टाइम नाही हम पाखरे तमे 3-4 जणु ठिया कर जी हले जण बाडी के पळेबो हमें तो कौन आंसर हबो टॉलरेंट ठीक अछि तो तुम जानि छ कोडा को सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एउडा को सब कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स और प्रीएम्बल रो एडजेक्टिव्स बहुत इंपोर्टेंट से टर्म उडा को बुझीबा से टर्म उडा कर मीनिंग तमे भल्लरे मने रख सोवरेन कोन रिपब्लिक कोन डेमोक्रेसी कोन सेक्युलर कोन ठीक अछि ओके which type of citizenship is approved by the constitution of India single citizenship regional citizenship dual citizenship temporary citizenship single citizenship okay hopefully single citizenship the constitution of India provides a single and uniform citizenship to every citizen of the country and citizen irrespective of his birth or resident is entitled to enjoy civil and political rights throughout the country माने जोठी भी से जन्म होइताउ जोटा हम आज पढिबा आर्टिकल 15 अंडर रे कहिछि जे on the basis of caste creed religion birthplace काहा को कोन करा जीवनी डिस्क्रिमिनेट करा जाई परिबनी समस्त एंटाइटल्ड हेबे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को अवेल करिवे ठीक अछि डन नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन when did the constituent assembly adopted the constitution of India constitution of India को केबे अडॉप्ट कला खाली तुम माने आंसर देबो ना कैमरा भी आंसर देबो कैमरा पिला माने देबो आंसर इट लागिवो माने को कहला जो क्विज न टाइप करके देबे हां लाइव रे इट लागिवो हम देखियो के को आंसर दोचन तमे खाली गाली सुनियो के से माने गाली फास्टा कोटा कोन फास्ट सेकंड ता होचो 26 नवंबर ना 26 जनवरी अडॉप्ट
आउ अडॉप्ट ठीक अछि एनाक्ट हेले केबे हबो 26 नवेम्बर अडॉप्ट हेले केबे हबो जहा हो 26 नवेम्बर 49 ठीक अछि कोन कला ना इन Constitution of India is the supreme law of India. It was adopted by the Constituent Assembly. सुनो adopted from by the Constituent Assembly of India on 26 November 1949 and became effective on 26 January 1950. ठीक अछि How many members were there in the drafting committee of the Indian Constitution? Drafting committee रो केते जण मेंबर थिले केते 7 ये मते कहि परियो ना ओडा किछि किछि आंसर कोन हबो 7 आलादी हाँ मुंशी मित्तल ओ देखि दवा ना ओडा को देखो The drafting committee of Indian Constitution had 7 members. किए से माने बी आर आंबेडकर के एम मुंशी ए के अय्यर एन गोपाल स्वामी एम डी सदुल्ला एंड बी एल मित्तर एंड खैतान ठीक अछि डीपी खैतान 29 अगस्त 1947 ने एटा तैयारी हिता ठीक अछि ड्राफ्टिंग कमिटी माने बुझी परछो पापा ड्राफ्टिंग कमिटी माने कोन कहलु ड्राफ्टिंग कमिटी हां कोन हेथुवा ड्राफ्टिंग कमिटी अरे कॉन्स्टिट्यूशन टा जेतेबेले लेखा हिची ठीक अछि एक नंबर लॉ कोटा हबो दुई नंबर लॉ कोटा हबो तीन नंबर लॉ टा कोटा परे कोटा आसीबो लॉ रो लैंग्वेज कोन हबो एई जो जिंसटा जने डिसाइड करछु मु एबे कहि देबी जे आजी आमे कोन करबा पॉलिटी पढबा बट एग्जैक्टली पढ़ा कोन हबो केमिति कोटा परे कोन पढ़ा हबो मु कोन कहिले तुम बुझी परिबो आ पढेबार लैंग्वेज कोन हबो तुमको जेमिति मु पढौची मु गोटे आईएएस स्टूडेंट को सेमिति पढी नॉट एट ऑल ठीक अछि ताकू टिका बेटर पढेबी तुमको जेमिति पढौची गोटे क्लास 6 पिला को सेमिति पढेबी नाही आ टिके बेटर पढेबी हां हां ठीक अछि बस तुम माने बिहेव सेमिति करूछ ठीक अछि माने तुम मानकर बिहेवियर सेम एटीट्यूड नाही गोटे राग द्वेष माने कोन काहे कि मु अछि एबे जाय काहे कि आई एम स्टिल अनटच्ड माने मते काहे कि चाकरी पर्यंत छुईनी ठीक अछि एटा आसीबा कथा तुम भी ओके छाड़ who had headed the drafting committee of the Indian Constitution एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन एवरीवन नोज दैट जे बी आर आंबेडकर एंड तांको कहा जाय द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट हां लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा on which day the constitution day celebrated every year in India रह जा मस्त केते आउ थरे 26 नवंबर ठीक अछि आउ बाबा 26 ओके ठीक 26 बस नेक्स्ट who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution किए कहिसंती जे इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन रो जो प्रीएम्बल टा अछि दैट इज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप माने केमिति आगो को हबा को जाउछि हॉरोस्कोप कोन करे फ्यूचर प्रेडिक्ट करे तो आगो को केमिति बहिटा आगो को केमिति हबा को जाउछि को भलिया रिजल्ट दबो को भलिया आउटपुट दबो सेटा देखा जायतिला कोठी प्रीएम्बल तो एई लाइन टा कहिथिले किए मते कहि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी श्योर पढ़ाइतला एटा ठीक अछि कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी next who was the first constituent assembly election held in India when was the first constituent assembly election
held in India. Constituent Assembly रो इलेक्शन प्रथम थर केबे हल किए कहयो 47 46 चंदन बाबू 1946 परफेक्ट आंसर 1946 ना कि देखो 1946 The first Constituent Assembly election was held in 1946 in India. The republic is governed in terms of Constitution of India, which was adopted by the same जिनस बारंबार लिखा है गोटे क्वेश्चन नो आंसर से तो जिनस आमे जल्दी जल्दी In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders draft the Constitution of India? 1928 कौन बोली कहा जाए एटा को नेहरू रिपोर्ट एग्जैक्टली नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली कौन हेतिला जते बेले तुमको ये बैकग्राउंड स्टोरी को है साइमन आसिले साइमन जते बेले गो बैक बोली नारा लगेई के ओटे दंगा हला इंडिया रे तो साइमन गो बैक ना सुनिचु ना नहीं हां तो पळेले तो जते बेले पळेले जिए थिले हमर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले इरविन थिले इरविन ही थे ठीक अच्छे इरविन कौन कले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रे जो माने बड़ बड़ नेता थिले तांको कहले जे तमरो केते पावर अछि मुस्लिम लीग भी कहला इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी कहले जे तमरो केते पावर अछि देखिबा जे तमे निजे निजे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नेहरू रिपोर्ट आस्थिला एमती गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करबा को एड्रेस करबा पाई ठीक अछि ओके नेक्स्ट 1928 रे was made by a committee headed by National Motilal Nehru. This committee was created when Lord Birkenhead, Secretary of State of India, asked the Indian leader to draft a Constitution of India. मुझे Lord Irwin कहदेली सी किए थिले Lord Irwin इंडिया रा गवर्नर जनरल थिले एटा जोटा लिखा हिची Lord Birkenhead टा कोन थिले से सेक्रेटरी जनरल माने जो ऑफिस टा कोठी थिबो लंडन ने थिबो तार हेड थिले कि से कहले तुम माने केते करि परिबो कर तो हमर आसिला पुनी यांकर भी मुस्लिम लीग रो कोन आस्थिला जिनास 14 पॉइंट ठीक अछि देन आसीबा में the total membership of Constituent Assembly was 389 of which dash were representative of princely state रो representation केते थिला 93 ठीक है 9 ओके डन नेक्स्ट 93 तो ओके देन आसिला कोन ना the member of the Constituent Assembly signed the Constitution of India on which date signed the Constitution of India एटा टिके ट्रिकी क्वेश्चन गोटे टिके चेंज आसी रमेश बाबू कोंतु केबे 24 मार्च 26 मार्च 26 नवंबर 1949 एटा कहू आंसर हां ना एटा आंसर नो आंसर 24 जनवरी 1950 दिदिनी पूर्व माने जो दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी हबो ता दिदिनी पूर्व देखो The member of Constituent Assembly signed the Constitution on 24th January 1950. बस पढ़ो सर बस पढ़ो On that day was the last meeting of the Constituent Assembly and Constitution of India with article एतिके और 395 part 22 and schedule 8 ठीक है ओके नेक्स्ट देखिबा In which of the following year did the Indian National Congress make the demand for a Constituent Assembly? को वर्ष प्रथम थर गोटे Constituent Assembly तैयारी होबा पे Indian National Congress कोन करथिला डिमांड करथिला को दिन को वर्ष 34 समस्ते श्योर किए करथिले कहि परिबो 1934 ठीक अछि 1934
ओके किए करथिले हवनी देख पाड़ीगन an idea for a constituent assembly was proposed in 1934 by M.N. Roy. M.N. Roy किए थिले इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर नथिले सी कहा मेंबर थिले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रो कोन रेगुलेटर नोरे जी एस्टैब्लिश करंती प्रोप्राइटर फाउंडर ठीक अछि एम.एन. रॉय ही फाउंड करथिले कोटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ओके हां द a pioneer of the communist movement in India, it became an official demand for Indian National Congress in 1935. Okay, then next question को जिबा which of the following is not a feature of Indian federal system? Indian federal system रो कोटा गोटे feature नुह written constitution, single tier government, independent judiciary to settle disputes and division of powers between the center and the state. Single tier government एटा जो जेहेतु एटा संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर बोली कुहाउची तो ता देरे दीटा रु अधिक कोन थिबे गवर्नमेंट माने गोटा करू अधिक तो गवर्नमेंट थिबा दरकार नले संघ कहीं कहीं के ठीक अछि नेक्स्ट the idea of liberty equality and fraternity contained in the preamble of the constitution are borrowed from the from which constitution france रे इजी क्वेश्चन आर फ्रांस ठीक अछि नेक्स्ट देखिए dash as the presenting a set of rules and principles on which all the people of the country can agree as the basis of the way in which they want to their country to be governed माने गोटे एमिति बही ना कह जो बही रे सबु लॉ लिखा है लोक माने चाहूचंती जे सेही लॉ अनुसार देश चालू तो कौन आसिल कॉन्स्टिट्यूशन आंसर को सॉल्यूशन लिखा है जे अरे सॉल्यूशन हला कॉन्स्टिट्यूशन देखिए the constitution of India was handwritten by handwritten हाथ रे किए लिखिचंती प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ठीक अछि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा the constitution of India was handwritten by this person took 6 months to handwritten 395 8 schedules and preamble of the constitution both in English and Hindi ठीक अछि next the constitution of India adopted many institutional dictates and procedures from the government of India 35 एटा everyone knows this जे government of India 35 रो maximum जिंस हमें adopt करिछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 35 मसिया बेलकू माने एटा एविडेंट हे जाइतिला जे से माने हमको गोटे बहुत भलो सिस्टम टे दबाकू चेष्टा करूथुले जे एमानकू आमे केते दिन कंट्रोल ले रखिबे रखि तो पारिबेनी तो आस्ते 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 जब दिया होतला 1935 रे गोटे भलो प्रोसीजर लॉ गोटे आस्तिला सेटा को हमें अडॉप्ट कर देले 1947 पर देन आसिला कोन the power of judicial review in the Indian constitution and the provision of independence of judiciary is taken from which country America sure समस्त श्योर अमेरिका बोली अरे जीनियस ओडा अमेरिका आंसर ठीक अछि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका जुडिशियल रिव्यू माने कोन ना गोटे थरो जजमेंट हे गला पर आउ थरे चेक करिवा पे और जदि पार्लियामेंट रे गोटे लॉ पळे आसिला ताको आउ थरे रिव्यू करिया पे ई दीटा जा केस रे जुडिशियल रिव्यू यूज हुए ठीक अछि मने करो सुप्रीम कोर्ट किबा हाई कोर्ट रे गोटे वर्डिक्ट आसिला
ता ऊपर आउ थरे रिव्यू हे एटा गोटे माने फाइनल जेमिति अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन आजिकल अछि आउ अछि नहीं तो सेमिति कोर्ट रो डिसीजन लास्ट डिसीजन थिला किंतु जुडिशियल रिव्यू थ्रो रे आउ कोर्ट रो डिसीजन लास्ट डिसीजन नो आउ थरे कोर्ट को कहबो देखो भलो रे एथर कैमरा पकई की माने केते बैट टच हेछि ना नहीं बॉल बाजछि ना नहीं देखो ठीक अछि कोन हां हेटा काइंड ऑफ नेक्स्ट which of the following provisions and the constitutions of different countries from which they have been adopted the constitution of India has been incorrectly paired माने कंट्री आउ कोन अडॉप्ट करा हिची इनकरेक्टली पेयर कोटा करा हिची पढ दोछ ऑप्शन उडा देखो द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन नो आछि कैरेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स रो आछि then directive principles of state policy कोठु आछि आयरलैंड रो आछि and कोटा डीटा देछि प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी कैनेडियन गवर्नमेंट रो आछि कैनेडियन कॉस्ट ताले एटा ही भूल कनाडा रो कोन आछि फेडरल स्ट्रक्चर हां ओहो ठीक अछि चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ठीक अछि ओके 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 एतो पढिछो ठीक अछि नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट कोन कहला ना प्रोसीजर फॉर द nomination of members to the Rajya Sabha in the constitution of in India is borrowed from which of the following countries माने राज्य सभा को जो नॉमिनेटेड है कि लोक माने जानती एटा को कंट्री रो कॉन्स्टिट्यूशन रो अडॉप्ट कराई छि सेही प्रोसीजर ता आयरलैंड एग्जैक्ट एवरीवन नेक्स्ट चल the procedure of amendment of the constitution in India Indian constitution is borrowed from which of the following countries South Africa समस्ती गण मन अछि South Africa ठीक अछि okay next the idea of residual power in Indian constitution was taken from which of the constitution residual power एटा टिके कष्ट हो गला नै जापान यूएसए साउथ अफ्रीका यूएसए ना आई डोंट थिंक यूएस कौन आंसर है रेसिडुअल पावर मते का एटा कनाडा ना जापान 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 आंसर एटा कोन जापान कनाडा The idea of residual power in the Indian constitution has been borrowed from the constitution of Canada. However, according to the article 248(2) of Indian constitution, Parliament has exclusive power to make any law with respect to any matter not enumerated in the list. माने जदि कौनसी गोटे पावर विषय मन कर 1950 बेले तमे देखिथिबो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एते डेवलप थिला नाही जो हमर आजकल फ्रॉड होउची साइबर डिपार्टमेंट एते स्ट्रांग थिला नथिला कंप्यूटर तो नथिला एडा कोठु आसीउ तो एबे जते बेले नुवा नुवा माने सेक्टर डिस्कवर होउची तो ता पे लॉ की करबो तयारी करबो सेटा तो ये रे लिखा हैनी कोथरे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हैनी तो नुवा जिंसटा डेवलप हला एबे ता पावर कहा पाखे रहइबो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे रहइबो एटा ही कहबा कथा रेसिडुअल पावर देछि हां ठीक है रेसिडुअल पावर नेक्स्ट financial emergency provision of Indian constitution had been borrowed from which constitution financial German कहितली जे जदी खाली इमरजेंसी कथा कहइबो ताले 1935 जदि आउ किछि एक्स्ट्रा कहिला
जे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हे जिवो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी फिनेंशियल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी एवडा सब कोठी लिखा है जर्मन टू जापान ना कोन हाँ अच्छी अच्छी प्रोसीजर केमिति माने लॉ टा केमिति प्रोसीजर को माने तयारी करी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन कोन आछि देखि दबा पढ दबा उठा डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक अछि तीन प्रकार इमरजेंसी आर्टिकल नंबर कहि परिबो हां ठीक अछि 352 356 360 ठीक अछि 52 टा हला 352 टा हला नेशनल इमरजेंसी 356 नंबर आर्टिकल टा हला स्टेट इमरजेंसी 360 टा हला फाइनेंशियल इमरजेंसी ओके जिबा एबे हमर पाठ पढा को जिबा ओके टिके पॉज मार दबा एटा